अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है समी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्शन करने वाले, उसका टाइटल है हाउ कैन वी ब्रिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग नए तो नहीं हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं उन्हें हमारी मोहब्बतें या हमारा सलूक अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर वो नए नहीं भी हैं तो अब भी वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। This happened in 2007 or 8. I was at Davos. This is Pakistani breakfast. Musharraf, General Musharraf was speaking. The hall was packed. Everybody wanted to hear what he's going to talk. I also got invited, I went. And he spoke and spoke and spoke. People are looking at, these are all business people, they're looking at, okay, what are your economic policies? Can we do business in your country or no? That's all they want to know. But this man went on saying how he knows how he is a great leader and how his leadership did this and that, and he was giving leadership lessons to everybody. Every one of them is a leader by himself. But he was giving leadership lessons, and the whole time, 2 hour time, he spent 1.5 hours. Everybody himself अपने आप में लीडर होता है। वाह। So he said only one question. This was supposed to be an interactive session, but he did all the talking. Then I raised my hand, because I had already met him previously. He said, okay, you. So I stood up and asked him, see, right now India and Pakistan, both of them, we are actually not developed countries. We like to call ourselves developing, because we're developing for too long. Forever if you're developing, you're not a developing country, okay? If you're developing somewhere, you must become developed. I said, this is happening for too long. The reason is, one major reason is, both the nations are spending enormous amount of money on this defense and nonsense. If India and Pakistan had known these issues, both the countries probably would have prospered by now. But somehow we couldn't keep that nonsense down, we fought all these years. Just 3 wars are not the thing. Preparing for the war is a horribly expensive process. I said, see, you don't expect the religious leaders in your country and our country to come to any agreement. It's waste of time doing all these interfaith meetings and things. Anyway, they will pretend and go home and they will preach their own thing, okay? Two military leaders cannot agree because we're pointing guns at each other, we are trained to shoot. Political leaders cannot agree because that will make them lose elections. But a business person has no issue. If there is a good deal in Pakistan, every Indian businessman will go and do deals in Pakistan. If there is a bridge to be built, for a $1 million bridge, they're offering $2 million, half of Hyderabad will go there. So I said, see, the first thing is, let's open up the business. If you open up the business, if daily transactions are happening, my people are on that side, your people on this side, my money there, your money here, I wouldn't want to bomb your country, you wouldn't want to bomb my country. Good ho gaya ji, good ho gaya. Likely that's beginning to happen now, this transaction business relationship in India and Pakistan. Because national borders will go away. That is very important. On the longer run, it is very important national borders get diluted. That is when armies will come down. That is when the potential of fighting on the planet will go down. That is when development will happen indiscriminately, according to capability, not according to national identity, isn't it? So this transaction should happen. And just previous day he was talking about how he's for peace and how he's looking for this and that, looking for support and money, but he forgot all that and he burst out. He said, how can we do business? You know, my dear friend, somebody mentioned name, he died in my arms in the war. I named my son after him because of that. We have spilled blood, we have lost people. How can we do business? We cannot do business. International press was amazed that this man just came out and said, we cannot do business with each other. Being the head of a nation,
But if we started doing business, don't do any of these, all these parlays which are very expensive, politicians meeting, anyway it's a foregone conclusion, it's not going to go anywhere. Do business, as much business as possible. You will see people will forget who the hell is a Pakistani, who is an Indian. वाकई, वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। पहले तो ये पॉइंट उनका बड़ा मतलब मुझे यार दिल को टच कर गया, और ये बात हम जरूर स्कूल में बच्चों को भी कहेंगे यार, कॉलेज में बच्चों को जो अभी जो है क्या कहते हैं 12th क्लास वाले हैं ना, उनको तो ये लाजमी कहेंगे कि भाई लीडर कौन होता है। लीडर की अगर डेफिनेशन आपने मतलब सुननी है, या उन भाइयों के लिए, अब मैं क्या कहूँ यार, यहाँ पे मुझे एक बंदा याद आ जाता है जो कहता है मेरा लीडर मेरा कैद। आपने कभी सुना होगा तो पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब नहीं चाहता कि मैं नाम लूं या किसी इस तरह का, होते हैं बंदे बीच में, तो इस तरह के बंदे कुछ होते हैं जी, मेरा कैद मेरा लीडर, जो ये कर देगा वो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। हाँ। तो ये चीज इन्होंने जो बात बताई है कि भाई मुशर्रफ ने किया कि जी अब बिजनेस पर्सन बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस की बात कर यार कि तू क्या बोल के आपकी कंट्री के और इंडिया की कंट्री के जो है बिजनेस कैसे स्टेब्लिश हो सकते हैं, कैसे जो है लोग एक दूसरे के साथ राब्ते कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सामान जो है वो कितना टैक्स लगेगा या विदाउट टैक्स होगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कितना बढ़ेगा। लेकिन उन हजरत साहब ने ये किया कि बस अपनी तारीफें करके कि मैं ऐसा लीडर मैं वैसा लीडर ये कर दूंगा, आने वाले वक्तों में वो हो जाएगा, तो करवा के कुछ भी नहीं। तो इन्होंने जो बात की कि एवरी पर्सन क्या हैड हिमसेल्फ अपने आप में वो लीडर है, अपने आप में लीडर है। तो ये बात जो है ना, ये यार ना मतलब क्या कहते हैं कि दिल को छू गई, और दरम्यान में बातें अच्छी अच्छी हुई, और एंड पे जो उन्होंने कहा कि हु द हेल इज पाकिस्तानी एंड हु द हेल इज इंडियन। तो ये बात भी जो है ना, अब ये वीडियो देख के मैं तो भाई चाहे मतलब कि आप कुछ भी कह लें, क्योंकि बाज़ बात ना कुछ इसी तरह का जो है कमेंट आ जाता है कि हम मतलब इंडियन है तो हमारी कौम महान, और ये इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है भैया, हमने इनकार नहीं किया, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका इनकार नहीं कर सकते, आपकी पावर का, आपके सारे कुछ का बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज है सच है, वो रियलिटी माननी चाहिए और हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो बात इन्होंने की, तो ये पर्सन जो है, ये मतलब इनके बारे में हमें सर्च आउट करना चाहिए कि ये कौन पर्सन है और कैसे जो है। अब देखे ना, इनका जो माइंड लेवल है वो क्या है, वो यही चाहते हैं कि मतलब एक पुरसुकून माहौल हो, और मतलब कोई बंदा ये ना कहे कि कौन पाकिस्तानी कौन इंडियन, और इस बेस पे जब हम चलेंगे ना, तो क्या कहते हैं कि क़यामत ढा देंगे, दुनिया को हैरान कर देंगे कि यार दुनिया पूरी जो है वो कहेगी कि वाकई जो है जो सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर था वो अब भी जो है, उनके लोग जो है वो अब भी महान है और इतनी ताकत रखते हैं कि अगर वो एक साथ क्या कहते हैं कि जुड़कर किसी भी कौम की तरफ जो है वो आंख कर देना, तो मेरा ख्याल है कि वो कौम वैसे ही डर के मारे जो है ना। अच्छा, ये जो बुजुर्ग हैं, ये हमें तो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कि ये कौन है, ये स्कॉलर हैं या क्या करते हैं, क्या इनके बारे में है, ये सारा कुछ है। तो पहले भी इनका एक लेक्चर इसी तरह का था, उस लेक्चर में काफी ज्यादा इनका जो लेवल हमने देखा, एक लेवल, तो उससे पता चला कि वाकई कोई बड़ी अहम शख्सियत है, बिल्कुल, बड़े इम्पोर्टेंट मैन है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है कि आज जो इनका लेक्चर है ये एक इसी तरह काम कर रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं जैसे एक बहुत अहम स्पीकर बोलता है, या जिस तरह मोटिवेटर लेक्चर देने वाले मजहबी स्कॉलर टाइप के भी लग रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ। अगर इस तरह का है तो हमारे व्यूवर्स हमें जरूर बताएंगे, और जितने भी इनके अगर किसी ने कोई पर्सनली इन्हें जानता है वो भी हमें बताइएगा कि ये वैसे भी मशहूर है यार, बता देंगे, बिल्कुल हमें बता देंगे। तो इसी के साथ इसके बारे में और तो मतलब अच्छी बातें थी, हमें आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, अब इनसे ज्यादा अच्छी बातें हम क्या कह सकते हैं या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो को करते इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।